Yo guys, what's up? Welcome back to another reaction. So our reaction is going to be on MC Code versus CZ from Spit Dope back to Roots. So yeah, as for now, you guys know कि Code, EMF are coming to Nepal to battle Nasto and ITIS respectively. Tara, we're bringing CZ as well. We're trying to bring CZ as well. Um, so yeah, might be by this video drops or your video को few hours मा या फिर within the day might be त्यो announcement पनि हुन्छ हैन. But guess who CZ is going to battle. So comment down below who CZ is going to battle. So yeah, त्यही भन्दै let's get to this battle. Who's gonna call? तेरी बाप की I'm battling Code aka Aditya Tiwari. Hey, okay. कोडले पनि यसरी नै कुन चाहिँ एउटा ब्याटलमा स्टार्ट गरेको थियो क्या अरे होइन. सो हु इज गोइङ फर्स्ट भने चाहिँ आफै एन्ड द्याट्स काइन्ड अफ रिबर्टल. तेरी बाप की I'm battling Code aka Aditya Tiwari, the drunken master. What a duality, an anomaly with no code of conduct or morality. Code runs only in its own world like virtual reality. Oof. Code of conduct, and this was फेरि यता code runs in his own world like virtual reality. So virtual reality बनाउनको लागि code चाहिन्छ and like that's a good name flip. Name wordplay. Code runs only in its own world like virtual reality. Y'all know I love this culture, right? And I never lose. Coming from the highest point, now it's time for me to go back to roots. How many years you've been battling, fool? We all know code is irrelevant now. We got AI tools. But still, your resume is trash, man. Battling all these mid-ass rappers against EMF and Desire. Those fumbles were self-sacrifices. No quality or spices. The big dog of Delhi is in crisis. They offer code to anyone these days, like discount prices. They offer code to anyone. Oof, that's a good one. That's a good one. Already been there. That was a good line. Code is irrelevant because of AI tools कि something के थियो. But अलिकति उयो कुरा नै हो because AI बनाउनको लागि नि प्रोग्रामिङ चाहिन्छ, प्रोग्रामिङको लागि कोडिङ चाहिन्छ. So त्यहाँ but यो लाइन चाहिँ डिस्काउन्टवाला बब्बाल. I don't know why नेपालको female rappers aren't doing something like this. कस्तो रिस उठ्छ कहिलेकाहीँ. They offer code to anyone these days, like discount prices. I'm hungry, still you ain't my last resort. Chasing bars and bits got you straight to court. My favorite sport got ruined with your news reports. I'm here to fix code once and for all, like site support. My 9 to 5 got me all day working on code. I'm tired of having to do this only for financial support. Also, I got the correct op code, instructed viciously, encrypted secretly, protected by the firewall just for me. I'm a developer, so I know how to deal with code perfectly. Nice. Actually, me CZ is a developer. So, त्यो op के भन्छ encrypted, firewall, अनि even अगाडिको line site support वाला. So हुन्छ नि, I'm going to fix code like site support त्यहाँ. अनि यहाँ पनि it's a very IT bar, very nice. I'm a developer, so I know how to deal with code perfectly. Battle rap is in my genes. No secrets, I'm in my piece. My username will be everywhere after I pass code like captcha screens. My username will... pass codes like captcha screen. Nice. Captcha भनेको if captcha screen भन्ने थाहा छैन भने त्यो आउँछ नि कहिलेकाहीँ साइटहरूमा इभन गुगलमा पनि आर यु रोबोट भनिसकेपछि त्यो आउँछ नि के अरे फिक्स गर्नु पनि क्लिक द पजल विथ यो त्यो वाला के आउँछ क्याप्चाहरू कहिलेकाहीँ के अरे के लेखेको छ त्यो रिराइट गर भनेर आउँछ. सो द्याट्स क्याप्चा टु दोज हु डोन्ट नो है. Will be everywhere after I pass code like captcha screens. Am I getting too technical, code? I'm just here for a reason. Because code became important all of a sudden, like placement seasons. Only controversy. Code became too important like placement season. इन्डियामा त्यस्तो छ, हाम्रोमा त्यो कल्चर छैन. हाम्रोमा इन्टर्न भन्छ, तर इन्डियामा लाइक प्लेसमेन्ट सिजनहरू चल्छन्. त्यो बेलामा युजली त्यही त हो, लाइक प्लेसमेन्टको लागि भने नि मान्छेहरू कोडिङ यताउता सबै पढ्न थाल्दा हुन्छ.
इन्जिनियरिङ आइटी स्टुडेन्ट्सहरूलाई थाहा छ Only controversies got you booked and the gas you're on. These days, everyone wants to challenge code like it's a hackathon. So I'm getting that. Another IT related bar. So hackathon, if म एक्सप्लेन मात्र गरिदिरहेको ह्याकाथन भने चाहिँ अब लाइक ग्रुप अफ पिपल युजली स्कुल कलेजेसहरूले गराइदिएर हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरू गएर या फिर हाफ ग्रुप अफ पिपल गएर विदिन एउटा टाइम लिमिट कति 24 आवर्स 48 आवर्स हुन्छ एउटा प्रोजेक्ट बनाएर दिनुपर्छ एउटा समथिङ केही इन्जिनियर गरेर दिनुपर्छ सो द्याट्स ह्याकाथन होइन अनि लाइक कोड लाइक उयो गरिरहेछ के अरे Like it's a hackathon. everyone You're on. These days, everyone wants to challenge code wants to challenge code like it's a hackathon. like it's a hackathon. So I'm getting that thrill itch. Head hunting, that's how I still pitch. He will still glitch. You see me drop code from the system, it's a kill switch. See, I got elaborate ideas. Guess how's your dad's plan? Riddled by confusion. He's not able to think. Damn, even gave you hints. Don't jump to conclusions, man. Just remember, every wrong answer will get you closer to your dad like hangman. Taco jump to conclusion भनेपछि I was expecting this line. Oh, ay. Okay. That was dark. That code that committed suicide. So Sir, will get you closer to your dad like hangman. Code scripted this whole Yamuna thing. I know. Crazy. He tried to sell us a story as a distraction. Maybe he hasn't been following his dad's footsteps lately. I guess not everything is genetic code like test tube babies. I think Yamuna wala is like where he went on code was about to commit suicide or something like that. के थियो अनि so त्यो अगाडि के पोइन्टसँग जोडेर now like you're not following your father's footstep. That's tough. And test tube babies, fuck. Thing is genetic code like test tube babies. I got a witty style with a winning smile, spitting lines that are killing lines. Everyone tune in as this kid will expose code in her next round is the Diddy trial. I don't know why Nepali female writers, battle rappers, please, यस्तो battle rap गरौँ, please. Legit. I mean, it's been ages I've not seen यतिसम्मको writing भएको battle rapper get from inners देखिको from यताउति everything man. तूने शुरू करा मेरे बाप से पर अब शुरू करते मेरी बड़ी माँ से वो गई थी बैंगलोर एक शादी पे हुई बेहोश जैसे ऑटो वाले गाली दे पूरे रात पूरे शाम घबराहट पे सुबह तक करवाना पड़ा भर्ती जानती नहीं थी वहाँ की भाषा बस वो थी उनकी गलती तूने अपने पिछले बैटल पे बोला दिल्ली के बारे में तू सारे राज खोलियो पर अगर तुझको बोलना मेरे शहर के बारे में मुझको ही तो बहन की लोड़ी हिंदी में बोलियो क्या अनप्रिडिक्टेबल मान्छे हो यार क्या अनप्रिडिक्टेबल स्टार्ट्स अफ विथ लाइक तूने बात करा मेरे बाप के बारे में लाइक रिबटल दिन ला टाइपले एन्ड देन लाइक के अरे बट के अरे मेरो कुरा गरौँ मेरो ठुलो आमाको बारेमा भनेपछि समथिङ बेङ्गलोरमा बेमा गएको some irrelevant shit and like comes to relevant thing because I think CG ले आफ्नो पुरानो ब्याटलमा she talk something about Delhi अनि अगर तपाईँ मेरो सिटीको बारेमा कुरा गर्नु छ भने चाहिँ हिन्दीमा बोल अगर बोलना तुझे कुछ मुझको मेरे शहर के बारे में तो बहन की लोड़ी हिंदी में बोलियो तेरे स्टाइल पे रखा नहीं कोई क्लास है जैसे बैंगलोर की बच्चियां जो पहनती हिजाब है
तो कैसे Okay. कर सकती फ्लेक्स टू लिटरेसी रेट दैट्स एज फिल्टर्ड एज योर कॉफी और हमें पता है हाँ तुम्हारे मंच में हाँ तुम्हारे स्टेज पे आते ज्यादा लोग बट इट्स ऑब्वियस एज फक उस पे धर्म का लगा पड़ता है हैं? तो कैसे कर सकती फ्लेक्स टू लिटरेसी रेट दैट्स एज फिल्टर्ड एज योर कॉफी और तू कैसे कर सकती फ्लेक्स टु लिटरेसी रेट सो अभियसली इट्स अन नेगेटिभ मतलब ड्रपमा अनि त्यो फिल्टर कफी है हमें पता है हाँ तुम्हारे मंच में हाँ तुम्हारे स्टेज पे आते ज्यादा लोग बट इट्स ऑब्वियस एज फक उस पे धर्म का लगा पड़ता है ओके बीच में तेरी ब्रा जैसा The fuck was that? Okay. त्यहाँ अलिकति अगाडिको लाइनमा इज टकिङ अबाउट लाइक हिजाब होइन क्लास अनि हिजाब भनेपछि त्यहाँ तेरो मञ्चमा मान्छेहरू धेरै आउँछ बिकज त्यहाँ धर्मको पर्दा छ एन्ड लाइक एकैछिनमा बिचमा तेरि ब्राकी तर अरे तुझे सपोर्ट ये गंदी सोच फैलाई है किसने आखिर आती कहाँ से है मर्दों की सोच क्योंकि बाप जाता ऑफिस बेटा क्या समझे उसके सर का बोझ बिताया नहीं समय तो अगर कुछ भी गलत हो एक बेटा हमेशा देगा अपने बाप को दोष पर सोचो अगर ये मदरहुड पे उतर आती मुखर्जी इंद्रानी बट फक इट ये प्रेशर कुकर को देने दे तू नहीं कर सकती बर्दाश्त कैसे मारती है गन बाज बट यू लव द तलवार्स कैसे मार्ती है गनबाज जब यु लाइक तलवार्स सो आई थिङ्क इट्स अ डेक उयो भने बट त्यो प्रेसर एन्ड उयो पनि नाइस see women like you take the best men probably going to treat your son like an investment और फिर एक्ट करे जैसे बोली हो bitches like you अपने मर्द को ट्रीट करती और फिर डाइवर्सिफाई करती अपना पोर्टफोलियो मर्द को ट्रीट करती और डाइवर्सिफाई करती अपना पोर्टफोलियो नाइस आई मिन आई गेस इट्स डाइभर्स मनी बिकज एलुमिनी होइन इन्डियामा त एकदम धेरै भइरहेछ डाइवर्सिफाई करती अपना पोर्टफोलियो हमेशा करती बॉडी तू ऑनबोर्ड की स्टोरी हो यो मिममा हेर थियो मेन कि लोडी तू हमेसा गर्दी बडी तू अनकोरकी स्टोरी हो अब मैले अनकोरको स्टोरी चाहिँ हेरेको होइन बट आई गेस इट्स स्यावेज हमेशा करती बॉडी तू ऑनबोर्ड की स्टोरी हो मैं तेरे घर में घुस के स्प्रे पेंट करूं बेफालतू में जेल हुई थी टोरी को क्योंकि एक गन का क्या करेगा ऐसी बेचेस हार्म करती खुद गोली को सेज तू डॉक्टर नहीं पर कोई इसको गोली तो मैं हाथ उठाऊं अगर ये बोली तो तुम समझे मैं हाथ उठाऊं अगर ये बोली तो अनुष्का ने रिटायर करा कोहली को Man, what the कहाँबाट आयो त्यो बात what the fuck man this guy is fucking unpredictable त्यही भएर पनि नेस्टो भर्सेस हिम विल बी सो फकिङ डोप बिकज दुवैजना अनप्रिडिक्टेबल एज फक छ कोहली को और सपने देखना अच्छी बात है तो तेरा गला घोटू जब तू सो रही हो See as an artist, death is the ultimate release. The drums and the snares are attractive, but the backbone are the keys. The world is all juice when lucid are the dreams. It's funny how code acts because they don't get the picture till they look at behind the scenes.
It's funny how they like code कसरी रन गर्छ कसैलाई थाहा हुँदैन. You have to watch. Normally कोडिङमा पनि त्यही हो, behind the scene वर्क गर्ने हो. So पिक्चर अगाडि देखेर थाहा हुँदैन. You have to watch it behind the scene. It's time, round two. Okay. Code is the most consistent Indian battler. I mean, at least that's the chatter. Y'all call him hungry when he literally looks like an eating disorder. I mean, here we go again. The yapper is back on live, yet with another conspiracy. Code Okay. opened his mouth. There comes another controversy. Yeah. Right. Code, all you do is yell in your rounds. I mean, it ain't nothing new. It doesn't make you intimidating, Code. It is just a fuel. My dream is true. A horror movie with a sneak preview. Mask on, stab him right in his throat. That's how we can scream too. Horror movie, Max on, Scream 2. Damn. Damn. Mask on, stab him right in his throat. That's how we can scream too. See, you really tried, but you couldn't stand beside. Right in my hands is where you really died. You only bark, dog. You never bite. Bite. I got a couple tricks at my arsenal like Bonnie and Clyde. Right. I got a couple trick on my arsenal like Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde say like thug couple, you know. So yeah, like at arsenal. पानी परिरहेछ, कहिले बत्ती जान्छ, कहिले पानी पर्छ, व्यस्तै छ है. Please don't mind. Got a couple tricks at my arsenal like Bonnie and Clyde. See, you said that your father, grandfather didn't live till a certain age. So you wouldn't too. Well, I'm right here, so I'll make sure your dreams come true. Oh, tough, I tough. know you ain't had a father figure. Panic attacks every time, numb with liquor. Pay close attention. What I'll say might be a trigger. Cause I'll make sure to teach you something that will stick forever. पर मैं कौन हूँ इस मर्द का मजाक उड़ाने वाली? See, Code, kids look up to you. Have some responsibility. See, Code, kids look up to you. Have some responsibility. All you do is betray others and say it's only vultures around me. Encore said it best. Alcohol is drinking you, Code. You literally have no clarity. You are a deadbeat and a criminal, Code. Not a father figure to this battle scene, per. You say that you love this culture, but you're the first to leave. Be for real, Code. I'm talking to your soul, not hiding behind them live streams. People still hype you up. That is the reason the culture is bleeding. You are feeding off of all the gas, Code. That is the only reason you're breathing. Tough. पर मैं कौन हूँ इस मर्द का मजाक उड़ाने वाली? पर मैं कौन हूँ इस मर्द का मजाक उड़ाने वाली? It ain't about him or battle rap anymore. I'm going to talk about something. The community ain't ready for us to talk about this topic. So many silenced voices echoing through these walls. The situation is getting toxic. Ask any of your female friends, have they been touched, stared at, or been violated? The society is getting toxic. We are duct taped by so many rules, told to stay silent in our room while the predators roam. I mean, where is the logic? Every single day we are told to cover up, not speak enough. Victim blame, slut shamed if we speak up. See, sexual violence is an epidemic and the monsters got no age limit. You all say it's the clothes she wore, the fact she roams. Then what about a 9-year-old? Did she ask for it? See, we really got it. She's spitting facts अगाडि पनि कोडको कुराहरूमा पनि विथ कोड लाइफ आउने यताउति त्यो कुराहरू. एन्ड देन लाइक कमिङ टु वाट या लाइक डेफिनेटली अ लट अफ पिपल डु से कि त्यो केटीले त्यसो लगाएको थियो, त्यसो गरेको थियो, त्यसो गरेको थियो. ल ठिक छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. वाट अबाउट 7-year-old 8-year-old भर्खरै जन्मेको बच्चा बिङ रेप्ड? त्यो क्वेसन्सहरू पनि त आउँछ नि त. त्यो कुराहरू पनि रिपिटेडली न्युजमा आइरहेको छ. सो वाट अबाउट द्याट? होइन, We really got to teach them early and not separate them from a young age. Instead of teaching your daughters to sit straight, teach your sons how to act straight. Nice. Time, round two. That's right. Yo. She mentioned a lot of shit about gender, man, discrimination, man, and that's cool, man. And that's common sense. I mean, you touched me throughout your round and didn't even ask for consent.
Yeah, you put that. You're that early. Touched me throughout your round and didn't even ask for consent. That was such a presence of mind, man. Such a presence of mind. Fuck. Congratulations Royal Challengers को जो IPL जीता इतने टाइम के बाद। पर हिप हॉप फैंस बैंगलोर पे जल्दी से अपने शहर से निकलो क्योंकि कोई ये शहर कुछ और ही करता है अपने फैंस के साथ। तू भी थी मेरी। Oh shit. Oh shit. Hip hop fans up. त्यो आरसीबी जित्दाखेरि स्टम्प भएको थियो नि त फ्यान्सहरू धेरैजना। सो ये शहर कुछ और ही करता अपने फैन। That's hard. निकलो क्योंकि कोई ये शहर कुछ और ही करता है अपने फैंस के साथ। तू भी थी मेरी इतने समय से जो मैं कर रहा हूँ। पर मैंने जितना इस गेम को प्यार करा उतना दब रहा हूँ इसमें चिन्ह स्वामी के बाहर कर रहा हूँ। दब रहा हूँ। डोरेमोन जैसी तू बिच तो सुन। मतलब भर्खर इज टकिङ अबाउट त्यो स्टम्पिङको बारेमा होइन, लाइक त्यो स्टेडियमको बारे यहाँ हो फ्यान्स एन्ड नाउ लाइक विष्णु मेरो डोरेमोन व्हाट जैसी तू बिच तो सुन। मैंने अपने भाई को बोला अपनी बीवी को ध्यान से चुनियो, तुम जैसे बिचेस को सुन के मेरी आइडियल बीवी गूंगी हो। It needs a renovation. एक इंजीनियर लड़की 3 साल से रैप कर रही, 3 गाने निकाले। कश्मीर जैसे क्या है तेरा ऑक्यूपेशन? I mean, Okay. तू मेरे एक टी-शर्ट की तरह है या एक शर्ट की तरह जो दिखती इतनी मस्त, निकालता बहुत ही कम। पर उस शर्ट की तरह तू है क्योंकि दिखती नहीं, तू है बेस्ट। तू इस शर्ट की तरह इसलिए क्योंकि यू नीड ओकेजन ताकि तू एक्ट कर सके ओप्रेस्ड। टफ पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, मैं डिनाई नहीं कर रहा। दैट सिस्टम इज रियली कॉम्प्लेक्स बट द वर्ल्ड इज अ मेस। जब एक लड़की बन के दुनिया को कर सकती है इम्प्रेस। या द्याट्स एक हिसाबको रिपोर्टल पनि अघिकोमा भयो होइन। यस पेट्रियार्की एक्जिस्ट गर्छ तर इट्स इजियर फर वुमेन टु इम्प्रेस पिपल जस्ट बाई बिङ वुमेन। यहाँ मेनहरूको त्यो हुँदैन। यस डेफिनेटली मेन र वुमेनको वर्ल्ड डिफ्रेन्स छ, मेनको प्रोज डिफ्रेन्स छ, कोन्स डिफ्रेन्स छ, फिमेलको प्रोज र कोन्स आम सरी त्यो चाहिँ के निस्क्यो, प्रोज र कोन्स डिफ्रेन्स छ होइन। सो दुइटै वर्डको डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो बट या लाइक फर वुमेन त्यही हो, लाइक टु इम्प्रेस पिपल यु जस्ट हेभ टु बी वुमेन, द्याट्स इट। कुड बी अब अलिकति कन्ट्राडिक्टरी लाइन बट काहीँ न काहीँ फ्याक्चुअलिटी होइन। एक लड़की बन के दुनिया को कर सकती है इम्प्रेस। एक कामयाब आदमी के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ है। पगार में जो उंगली देती मांगती। के भने औरत का हाथ है। पगार में जो उंगली देती मांगती। पर गाँड में जो उंगली देती माग्दी के भयो त्यसपछि? हमेशा एक औरत का हाथ है। पगार में जो उंगली देती मांगती। एक कामयाब आदमी में हमेशा एक औरत का हाथ है, पर जो देती कान में उंगली मारती गुची पूची औरत का साथ है। पर एक चीज याद रख, तू अपने कॉलेज से नहीं निकली। ये हिप हॉप तेरे लिए मेला है और भूसरी वाली तू रैप कर रही क्योंकि तेरा बाप तुझे करने दे रहा है। Facts. Tough one. फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि तूने सेलिब्रिटी जैसे कमाई नहीं, 2 कदम ऐश्वर्या से पीछे क्योंकि तेरे पास खुद की राय नहीं।
And that's time. Nice. Yo, like that. यो dope battle भयो. I hope every line of हाम्रो dope हुन्छ. हैन? Let's hope for that. So September 13, Better House. We'll see you guys either. With that being said, we'll see you guys again on the reaction. Till then, take care.